Hello and welcome back to the channel. This is day 3 of Goa and today is 6th of November. Sunday. Yesterday was Abhinav's birthday. We celebrated like hell, lot of fun, and now we are walking towards a closest cafe to our stay, which is a Bee's Kitchen. It's a Mexican cafe, but we get a very good coffee. We did experience it last night. And we decided that today's breakfast or today's coffee, morning coffee would be done there. तो अभी हम निकले हैं and just a quick update, हमें हमारी बाइक्स मिल चुकी है और today would be more of exploring outside Arambol because we have decided already कि हमें पहले के initial days at least Arambol में रह के गोवा settle होना है and for a while and just get to the vibe and that's it. So अभी हम जा रहे हैं to Bee's Knees, sorry, it was in kitchen. This is the place. And there we are. Boys are already here. Coffee? Yes. Coffee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coffees. Okay. So the cafe is somewhere like this. Let me set it up. Here's the entrance. And this is where you have a sitting area, and there are some tables in the center and the same kind of sitting area is there back there, and it's very good place. In the evening also it's very beautiful, it's very calm, chill. अगर आपको कोई ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह में नहीं जाना है, थोड़ा सा आइसोलेशन चाहिए, good place to come in Arambol, the Beanies. Look at your Google or the what do you call it, the location, the geolocation will be in the description box below. Do like, share, subscribe. See you at the road. Bye bye. Yeah. Been from in the building. Since we in the building. Pour out the bubbles, we holding our liquor down. You see my driver. I don't trust him. ये थोड़ा सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इसकी आदत है मौत को छुके से रिटर्न. All I really wanna know when we leaving, all I really need to know is when we leaving, all I really wanna know when we leaving, all I really need to know is when we leaving. चल रहा है, आपको शायद से आवाज़ नहीं आता होगा. So I'm right here at Anjuna. Purple Martini के बाजू में है. That's where the Purple Martini is, and this is the view from the restaurant right now. This is gonna be the place for tonight where we're gonna enjoy. Finally we found a place where we can, kind of party or something like that. I hope you enjoyed. I'll put some chota mota glimpse of this place maybe after the dark as well and show you the dance floor. That's it for now. Keep watching and experience the way I am experiencing it. We all are doing and enjoying it right now. This is Sonic Bar Restaurant. Yo people. I take you and you, and you and you, and you, and you and you, and you too. Channel. This is day last of our Goa trip and we are back again in Beanies. Last final breakfast या फिर brunch कर रहे हैं हम और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं. Day 3 का या फिर day 3 नहीं, कौन सा day 4? कल क्या था? Day 4. Day 5 है. अरे कल क्या था? 4. छोकरे लोग हैं ना,
इनको अ पूछो तो इनको क सुना देता है। हाँ बोल ना। अभिषेक बाम 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 विथ फेक स्माइल एंड सैड फेसेस। बाइक को जाने का है गोवा छोड़ के, इधर ही चले लेते। आई लाइक द वाइब। रिप्लाई इसके लिए नहीं कर रहे थे। सब लोग फुल जोन्ड आउट। फाइनली ट्रिप खत्म हो रहा है, घर जा रहे हैं। मज़ा आएगा। ये हमारे दो नशेड़ी दोस्त। ये बात तुमको उधर दोहराने नहीं थी ना। क्या कर रहे तू? ये बात तुमको उधर दोहराने थी ना जो मुझे बोला। सो राइट, अभी हम यहाँ से ऑलरेडी हमने हॉस्टल चेकआउट कर लिया है। बैग्स वहीं पे रखे हुए हैं बाद में बोला। और हम लोग जस्ट रुके क्योंकि आज का एक और एक्स्ट्रा दिन। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So sorry for the interruption. So we are already at the railway station right now. We have travelled from Arambol to Karmali railway station and we have a train from here. और हम ऑलरेडी स्टेशन पे तो है ही, बंदे लोग वहाँ पे बैठे हुए। हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक है और ये लेक कुछ इस तरह से है। बस स्टेशन वहाँ पे है, यहाँ वो लेक है। And this is gonna be the end of the vlog. The journey is gonna be just straight to Thane by morning 4-5 o'clock max if the train is not late, and that will be the end. We have exhausted with all our days of stay in Goa. अभी I believe अभी तक आप ये सीरीज़ को देख रहे हो और आपको अगर ये वीडियो या फिर ये पैटर्न में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन से व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इफ़ यू हैव सीइंग दिस वीडियो, आई ऑल्सो पुट मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन रिलेटेड व्लॉग्स एज वेल। तो लेट मी नो आपको इनमें से क्या पसंद आ रहा है एंड वाई यू आर स्टिल फॉलोइंग मी एंड वाई यू वुड लाइक टू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉट यू वुड लाइक टू वॉच। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मैं बस अब कुछ है नहीं बोलने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये 4-5 दिन गोवा का अगर मैं समराइज़ करूँ तो इट वॉज़ ग्रेट, लॉट मैनी एडवेंचर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी एज यू हैव नोन द डे 1। उसके बाद भी द एक्सप्लोरेशन ऑफ गोवा, व्हाट वी डिड, ट्राइंग टू हंट फॉर अ पार्टी, लुक फॉर अ पार्टी, अटेंड वन, गो रेव मैड स्टफ ऑल द वे थ्रू, जो मैंने ब्लॉग में डाला नहीं है। And the struggle to reach Goa. वो तो था, वो तो डे 1 में है। A1 में। पर अभी के लिए द रिटर्न जर्नी इज़ मोर स्मूदर, मोर comfortable and one straight train from here and then we'll be at home. I hope you have liked this series from the Goa Diaries and see you in the next adventure or the next travel diary whenever I go through. That's it for now. Ciao. Hit like, subscribe. Subscribe. Thank you. Which is in the vlog because to edit करते टाइम याद रखे अपन पिए हुए थे। Dude, if you fucking record this, I wanna say you're the fucking hype. And this is a secret, so fucking don't share. I'll tell you, no one is fuck. You ज़्यादा चाह रहे हो इसको कुछ। हम लोग गोवा